You did not get बोलो R क्या है? P plus HNO3. हाँ? P plus HNO3. P plus HNO3 which gives NO2. gives you NO2 plus H2. H2O ना? Yeah, H2 plus H2 PO4. H2 PO4. See, count the number of atoms. ये एक ही है, सिर्फ 5 है, 3 है, 2 है, इसमें 2, 3 और ये 7 है, राइट ना? हाइड्रोजन कितना इधर? 4 है, ऑक्सीजन 6 है ना, राइट? तो ऑक्सीजन अगर 6 है तो इधर कितना है? 4, 5, 7 है, इसको एक और इवन कर दो। ऑक्सीजन को इवन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 कर दे रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कब ऑक्सीजन को इवन कर दे रहे, राइट ना? कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया, राइट? एक सेकंड हाइड्रोजन इधर कितना हो जाएगा? 6 नाइट्रोजन, यस और नो? ओके, 18 ऑक्सीजन हो रहा है, 18 होगा कि नहीं? कब? 12 plus 2 14, 14 plus 4 18 हो गया। रिएक्शन बैलेंस। Then the answer is given. Wrong answer. वो आंसर रॉन्ग हो गया, ठीक है कि नहीं? Why HNO3 कैसे आएगा उधर? ठीक है? Any other reaction? No, sir. Okay. बराबर? Chemical reaction balancing हो गया. Now we are going for the next part of the topic. What is that? Atomic mass. Right ना? Atomic mass का concept है. और कोई problem reaction कितना reaction balancing किया था हमने? 10 reactions. What's your name? First name? What's your name? Ashwi. From which school? Sign क्या है? Sign. So we have done how much? पूरा 10 reactions और वो A B C D हमने किया था. Sir, हमने A C E G I K almost 20 reactions हो गया. Now remaining you to practice at home. ठीक है ना? From the book. That is ICSE का जो जितने भी question I mark today, you have to write. But today we have to go for the next part of the topic. And what is that? For example, relative atomic mass. ठीक है? What is relative atomic? You know very well. Every matter is made up of what? Particles. Those particles are of two types. John Dalton in 1808 he came out with a sensational statement. What is the sensational statement? And that was what, for example, that John Dalton said every matter is made up of a large number of tiny particles called atoms. But atoms are unstable, so there is a group of atoms combining to form what? Molecules. So molecules are basically a bunch of atoms. Right now? Yes. A group of atoms. Okay. Now atoms basically are unstable, so they tend to combine. These atoms, हम लोग बोलेंगे तो there are two kinds of fruits. One is available singly, one mango, orange, one chiku. There is grapes. Then that lychee are in what? Or yes. So molecules हो गए और ये atoms हो गए. ऐसा सोचो. Okay, atoms basically, okay, they are so small. They are so small. Likewise, molecules also so small that they cannot be measured. They cannot be weighed on the balance. What we do? They are so small because anything which is small, just like let us say, for example, feather को weigh करना है, बहुत मुश्किल से weigh होगा. और वो feather तो अनगिनत atom से बना है. अगर feather को weigh करना इतना difficult है, तो atoms को weigh नहीं कर सकते. Because first of all, they are invisible. Right ना? कुछ चीज को invisible कैसे weigh करेंगे? पहले तो ऐसे यहाँ से निकालने के लिए मालूम नहीं पड़ेगा आए कि नहीं आए.
राइट? तो बैलेंस करना दूर की बात, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एटॉमिक मास रिलेट करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं। बराबर? इसका मतलब क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है कंपेरेबल एटॉमिक मास, मींस इसमें सबसे छोटा एलिमेंट दे सेलेक्टेड हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास हम लोग 1 यूनिट कर रहे हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिफाइड मास। On the basis of this hydrogen, we can compare the mass of the other. So the relative atomic mass is basically relative atomic mass, which is denoted as RAM, is a ratio of mass of, ध्यान से सुनो, mass of one atom of an element in comparison to mass of one atom of what? Hydrogen. क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा है, राइट? इसका कंपेयर, that means it tells us how many times one atom of that element is heavier than one atom of hydrogen. इसको ऐसा समझो, इस वर्ष for example, you go to a fruit vendor and that fruit vendor is actually having, for example, one watermelon which is considered as 1 carbon, and he doesn't have weights, ठीक है ना? But you have you've got the habit of that particular fruit vendor that he, whenever we go for some fruits buying, he doesn't have the weights and metals का वो नहीं है, ठीक है? और डिजिटल बैलेंस नहीं है उसके पास, वो कभी भी एक दूसरे फ्रूट से कंपेयर करता है दूसरे का मास। तो watermelon is like 1 carbon and you want to buy oranges, suppose, so what he does is a fulcrum of that weighing balance, ठीक है? अभी fulcrum क्या indicate, कुछ भी नहीं इधर, this is, it's going to be slightly tilted this way, yes or no? यानी इसका weight ज्यादा रहेगा इस side, and now he starts placing 1 orange, let us say 1 orange means 1 hydrogen है, ठीक है? अब जैसे एक हाइड्रोजन डाला तो थोड़ा सा ये इधर है, yes or no? थोड़ा सा ऊपर, और एक हाइड्रोजन थोड़ा सा और ऊपर, तीसरा, चौथा, ऐसा करके ही एडेड, स्टार्ट्स एडिंग 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 9 हो गया, 10 11, the moment he puts 12, fulcrum gets balanced, I mean दोनों सेट बैलेंस। That means one can say that 1 carbon atom or that 1 watermelon is 12 times heavier than mass of what? 1 atom of orange, yes or no? यानी इसको 12 जब ऑरेंज चढ़ेगा तब जाके इसका वेट बैलेंस, वैसे एक कार्बन एटम is 12 times heavier than mass of 1 atom hydrogen. So they said that if hydrogen का mass 1 U है, तो कार्बन का कितना है? 12. This is the only way we can compare, okay? And therefore they started comparing and they said carbon का इतना है तो nitrogen का 14 मिला, यानी ऑरेंज की जगह पे चीकू दिया, चीकू means nitrogen, ऑरेंज means carbon, तो अलग अलग फ्रूट सभी, चीकू तो इतना छोटा छोटा रहता है, तो ऑरेंज से ज्यादा चढ़ेगा ना, 14 चीकू चढ़ेगा, राइट? ऐसा करके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, then नाइट्रोजन के बाद फॉर एग्जांपल we can say नाइट्रोजन and then कार्बन, ओके? ऑक्सीजन का 16 चढ़ा, 16, उसके बाद फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन इज व्हाट, फॉर एग्जांपल नियॉन 20, तो वो गैस है, but they have found out the atomic mass, and sodium 23, okay? Sodium 23, magnesium 24, calcium 40, but before that chlorine is 35.5, ये fractional value है, ठीक है? phosphorus 31, sulfur 32, ऐसा करके अलग अलग atomic mass है। But you will say, sir, what is this 1 U? 1 U scientists ने find out कि 1.66 into 10 raised to minus 24 grams, अगर grams में लेना है, ठीक है? यानी इसी को सबको मल्टीप्लाई कर दो ये कांस्टेंट नंबर्स, तो अभी बार बार वो नंबर आएगा तो इट्स गोइंग टू बी वेरी मच इनकन्वीनियंट, सो वी राइट इन प्लेस ऑफ दिस वी राइट U, 1 U का मतलब इतना ग्राम्स। So what is it? But then they said, sir, hydrogen has got 3 isotopes. Which are those isotopes of hydrogen? What are isotopes? Isotopes are atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers. इनका mass number अलग है,
So hydrogen was not giving accurate result. So they selected oxygen. They found oxygen 8, 8, 8, 16, 17, 18. Yes or no? Oxygen also was not getting a standard, giving a standard answer, correct answer. So they selected carbon. Carbon atomic number 6 and their mass number 12 and 14. But 14 का जो abundance है nature में बहुत ही कम है. The abundance of this carbon in the nature is what means the presence of this carbon in nature, this type of carbon is 99.99%. That is almost the mass of carbon is exactly what 12. Yes or no? इसका एवरेज लेंगे तो खाली 12. यानी आपने सबको 100 टेस्ट दिया है तो उसमें 100 टेस्ट में आपको 99.99 टाइम्स आपको 12 मार्क मिल रहा है. Are you supposed to take average for this? No. एक टेस्ट में आपको थोड़ा सा ज्यादा ही मिला रहेगा, but 99.99 and almost 100 टेस्ट में आपको 12 मार्क, 99.99% टाइम्स. तो आपको टीचर के बोले एवरेज लेने की जरूरत नहीं, आपका आंसर 12 ही आएगा. यदि आपका मार्क्स 12 ही मिलेगा. Okay, so therefore this element. So now see, अब ये कैसे इसको कैसे चेंज करेंगे? A small child came to the fruit vendor. And he said, I'm interested in watermelon. But मैं इतना बड़ा तो नहीं कर सकता हूँ. मैं तो इतना छोटा हूँ, right ना? तो मुझे इसका, for example, एक orange के बराबर मुझे watermelon पे करके दे. तो fruit vendor also thought, अरे ये तो मैं standard अपना weight लेके रख रहा हूँ. But when he looked at the child, it's very much hot. He wants, for example, some kind of hydrated kind of food, fruit. So he said, okay, I'm ready to, because now it's just, for example, I'm left out with other watermelon, I can use it for that weight, okay, balancing. So let me give him the weight of one orange. With respect to weight of one orange, I want to give him, for example, this particular watermelon का जितना भी भाग करेंगे, उसके सबसे उसको I will give. Okay, because he is not able to eat fully. तो अभी क्या करना है? So what he did, he divided this watermelon into two halves and weighed that one of the half, but it was not balanced. Then he divided again 4 parts. 1/4 part is the नहीं हो. 1/6 रखा, 1/8 रखा, 1/10 रखा, but जैसे 1/12 रखा उसको fruit vendor ने, ये देखो. Okay, fruit vendor ने 1/12 part का, यानी 12 भाग में से एक पार्ट जो रखा watermelon का यहाँ, तब जाके दोनों सेट बैलेंस. In other words, one atom of hydrogen is nothing but what? 1/12 mass of one atom of what? Carbon. Yes or no? एक ऑरेंज का मास कितना है? 1/12 है ना? तो इमीडिएटली उसको दे दिया और वास्ते कितने चला गया खाने. So this is the way we can just understand the story episode. Cases are 1/12 क्या है? तो either आप one atom of carbon लिखे, 1/12 mass of one atom of carbon लिखो, या you can write mass of one atom of hydrogen. The mass of one atom of hydrogen is 1/12 mass. The mass of one atom of carbon कितना है? 12. 1/12 into 12 is what? 1, which is mass of one atom of hydrogen. To compare it with when you're writing this particular definition, आपको ये definition लिखना है. What is that? It is a ratio of mass of one atom of an element to 1/12 mass of one atom of carbon. For definition, meaning is what? That how many times one atom of that element is heavier with respect to one atom of hydrogen. Okay, meaning वैसे बोलना है. Okay, but लिखने के टाइम आपको 1/12 concept. Okay, now then you will say, sir, but what about molecules? Now molecules का जो mass रहेगा उसको क्या बोलते हैं? Molecular mass. ठीक है ना? Okay, what is molecular mass? It's the sum total of atomic masses of elements present here in the molecule. बोलने से इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर सपोज कॉन्सेप्ट को डेफिनेशन देखेंगे तो मास ऑफ वन एटम की जगह पे क्या आएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आ जाएगा. ये डिफरेंस है. और ये 1/12 mass of one atom of carbon. You always compare the mass of one molecule of a substance or element with respect to what? 1/12 mass of one atom of carbon or one atom of mass of one atom of hydrogen.
But here, if you want to find out the total of atomic masses of elements present in the molecule of all elements, then what is the, for example, like suppose somebody wants to know what is the molecular mass of carbon dioxide. तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12. पहले तो इसमें देखो कितने कार्बन है. एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है. यस और नो? क्या हो जाएगा? कार्बन का मास कितना है 12 प्लस 2 into 16. That means how much? 2 into 16 कितना हो जाएगा? 32 plus 12 44 unified mass. Somebody says, sir, what is the molecular mass of water? It's a sum total of the atomic masses. Yes or no? Total of all the atomic masses or atomic masses of all elements present in the molecule. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. 2 हाइड्रोजन का मास कितना है 1 और ये 16 कितना हो गया 16. हाँ 18 unified mass. Likewise glucose C6H12O6 6 carbon atoms plus 12 हाइड्रोजन plus 6 into oxygen कितना है 16. 12 6 are 72. 12 1s are 12 plus 16 6 are 96. 180 और यदि इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 180 ऑरेंजेस रखना पड़ेगा. अगर आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओके राइट नाउ दिस इज मॉलिक्यूलर मास. और मॉलिक्यूलर मास का एक्चुअल कांसेप्ट डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ मास ऑफ one molecule of not an element of a compound or of a substance लिख दे. और substance का element भी आ गया, compound भी आ गया. Upon 1/12 mass of one atom of carbon 12 isotope. Variety of them. जैसे हम लोग fruit market में जाते हैं देखो अलग-अलग variety of apples मिलते हैं. बहुत सारे green apples, red apples, Washington apples, Kashmiri apples, Australian apples, ऐसा करके अलग अलग. और जिसका सबसे ज्यादा abundance कौन सा जगह इंडिया में? कश्मीर. क्योंकि कश्मीर से नजदीक इधर इंडिया में तो मिलेगा. ओके वैसे इसलिए आम यहाँ पे ज्यादा कहाँ से मिलेगा? रत्नागिरी. तो ज्यादातर नॉर्थ साइड में कम जाएगा अभी क्योंकि उधर बहुत दूर है. तो इट विल गो बट यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलेगी. आप बोलेंगे सर उसका अबंडेंस ज्यादा है रत्नागिरी मैंगोज. बट वहां का नॉर्थ साइड या जो भी दूसरे साइड का बाद में आएगा. बिकॉज नाउ मैंगोज आर ग्रोइंग एट डिफरेंट टाइम. ये तो कौन सा है मैंगो फेमस लंगड़ा which comes only in rainy season. नॉर्थ का फेमस और उसका टेस्ट जब खट्टा मीठा रहता है सब लोग बोलते हैं. ग्रीन कलर नहीं रहता है. तो now it is not available. Why? It is not raining. जब रेन होता है तब उसका अबंडेंस अभी क्या होगा? जीरो. अबंडेंस इज प्रेजेंस. देखा आपने पूरा हो गया. देखिए पूरा ये सब लिखना है आपको. फैन स्विच ऑन स्विच ऑन. हाँ ज्यादा हो गया.
This is one thing we have done. One more thing we have to do. What is that? One is called percentage composition. What is this percentage composition? कोई भी element का percentage अगर molecule में find out करना है, how would you find out? Suppose I want to find out the percentage of carbon in carbon dioxide. So what that is called percentage composition. So percentage composition of an element. Like suppose how you find out the percentage of one of the subject which you 4 marks. Okay. So likewise, percentage composition of an element in a compound can be calculated in this manner. What is that? Is equal to, okay, mass of, number of atoms of that element present in the molecule, the compound. Okay, number of atoms of that element multiplied by its atomic mass. Upon the molecular mass. Molecular mass calculate किया, atomic mass को grams में express कर दो, तो molecular mass भी grams में आएगा. ये जो चीज है, unified mass ले रहे हैं, तो उसको grams में ले लेते हैं. तो क्योंकि मास का यूनिट क्या है ग्राम से फॉर्म है, तो अगर इसको ग्राम में लेकर इसको भी हम लोग दिस एक्सप्रेस करते हैं बिकॉज़ इट्स अ रेशियो. नहीं भी लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बिकॉज़ रेशियो में ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा इनटू बिकॉज़ परसेंटेज कंपोजिशन 100. ओके, अब यहां पे देखो नंबर ऑफ एटम, अभी कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मेनी, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ विल यू फाइंड आउट? कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 1. इसका एटॉमिक मास कितना है? 12. अभी किया था 12, ठीक है, 12. और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 41 भी कैलकुलेट किया इनटू 100. क्यों? बराबर. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट? नाउ लेट्स से दिस पर्टिकुलर पार्ट 222 ठीक है, 600 upon what? 20. फिर से कैंसिल होगा. 2 11s are yes or no? 3. अब डायरेक्ट डिवीजन 300 upon 11. 11 2s are 22. राइट ना? कितना है? 8 बचा. 11 7s are 77. 3 बचा. Yes or no? 11 2s are 20. 27.2727 is this is percentage of carbon. I want to find out the percentage of oxygen. How will you find out percentage of oxygen? There are 2 methods. Percentage of oxygen, nothing but what? Oxygen, how many atoms is there? 2. What is the atomic mass of oxygen? 16. 44 into what? 2 11s. Right now? Okay. Direct division. 11 1s are 11. Huh? 22, sorry, 22. फिर 11 और ये कितना हो जाएगा? 8. ठीक है कि नहीं? तो अभी इस बार क्या हो जाएगा? 800 upon 11. 11 7s are 77. ठीक है ना? 3 बचा. 11 3s are 11 2s are 22. 8 बचा. Yes or no? 11 7s are almost. Right ना? अभी देखो यहाँ पे 100 टू करना, इसका क्या हो जाएगा? 7, इसका 2 आ जाएगा. Almost 99.99 is almost equal to 100. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हम लोग को याद रखना है, ओके, कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो दोनों मिला के 100. If you don't want to do this calculation, what you can do? Percentage of oxygen is equal to percentage 100% total आएगा minus 27.27. Yes or no? 72.72 approximately. That means yes or no? Yes.
माइनस अगर 2 एलिमेंट है 3 एलिमेंट है तो 2 कैलकुलेट करने के बाद थर्ड का 100 से माइनस करें ऐसे this is called percentage formulation. Okay, this way we can calculate. Now, what is important over here? The last part of this problem. What is that? Empirical formula or molecular formula. Actually, molecular formula is here, empirical formula here, but I will go for this. What is the meaning of molecular formula? Molecular formula. If somebody asks me, sir, what is the molecular formula for? Let us say glucose. So I will say C6H12O6. Great. Okay. This is the actual number of atoms present in the molecule. So molecular formula represents the actual number of atoms. But then you will say, sir, what is empirical formula? Empirical formula. Well, empirical formula is nothing but what? Is the simplest formula of a molecule. What is empirical formula? Simplest formula. Simplest का मतलब क्या है? इसका simplest कैसे find out करेंगे? Common number से divide कर देंगे. 6 is a common number over here. What is that? CH2O. This is the simplest form. If somebody says that methane का molecular formula CH4 है, so empirical formula also CH4. C2H6, which is the ethane का formula, okay, or CH3 is empirical. Then, अगर suppose कोई बोलेगा, for example, benzene का formula C6H6, then this molecular formula is here 6 times empirical formula. Can I say methane ka molecular formula of methane is 1 time the empirical formula? This is 2 times empirical formula. ये 2 गुना अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई ये फॉर्मूला मिलेगा और अगर ये आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब in other words we can build up a general thing. Molecular formula Mn is equal to 8 times because this 1 2 3 4 5 6 यानी n number लेंगे यानी whole number into what? That means molecular formula is n times greater than empirical. And this n can take value 1 2 3 4 5. तो ये खाली आपको कॉन्सेप्ट याद है. ठीक है? एक लास्ट में क्या ना देखो. Let's go for the question and answer. Stop.
Yeah. Let us the questions. When I exercise at home. So one thing almost हो गया था ना? People follow that one. So then one C also balancing हो गया था, right? ना? Yes, one C पे चलते, right? One C पे देखो, right? Okay, now then one C में क्या है? One fill in the blanks. That then use simple dash for oxygen and dash for hydrogen. Dash missing over there. दो dash होना चाहिए ना? एक ही dash. So one is what? अगर ऑक्सीजन है तो सिर्फ सर्कल रहेगा, हाइड्रोजन में एक नॉट रहेगा, सर्कल. Then simple represent dash of the atoms of an element, number of atoms. That's all. Right? Yes. Then symbolic expression for molecule is what? Is called formula. Sodium chloride has two radicals. Sodium is basic radical, while chloride is acidic radical. Valence of carbon in methane is what? 4. C2 and 6 is 6. Right now? Yes. और इसमें कितना है? 4. और लास्ट में क्या हो जाएगा? 2. एक्चुअली इसमें सब में क्या हो जाएगा? What is valence C? देखो वैलेंस C का डेफिनेशन इधर दिया है. एक मिनट. नहीं इसमें रॉन्ग हो गया. 6 4 ऐसा नहीं आएगा ना. बैलेंस ऑफ कार्बन एक फर्स्ट में 4 है, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं ना. इसमें 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के साथ 3 होगा ना. 3 बैलेंस 3. इधर 2 कार्बन के साथ 4 है, एक के साथ 2, इधर 2 के साथ 2 है, तो एक के साथ 1 है ना, 1. Then valence of iron in iron chloride FeCl2 is what? +2 and FeCl3 +3. Yes or no? Yeah, what is the formula for iron 3 carbonate? Iron 3 carbonate का मतलब है iron का valence 3 है. Yes or no? Carbonate का valence 2 है. First time I told you ना. So iron 3 carbonate is what? Iron का valence is 3. Carbonate का valence is 2. Yes or no? 3 and 2 cross party. So 2. बराबर? पैकेट डालने की जरूरत. So now all of you fill up that whole blank. Okay? How to fill up the first example they have given? It's magnesium chloride, you write MgCl. अगर वो for example magnesium nitrate है तो MgL. अगर सोडियम है तो NaCl. सोडियम के साथ नाइट्रेट NaN. See the balance. Do it and tell me what is the answer. I'll give you 5 minutes time.
Any doubt in any of the question? नीचे उसका आंसर दिया है, आप देख सकते हैं नीचे उसका आंसर दिया है। पेंसिल से लिखिए, पेंसिल से बिकॉज़ मिस्टेक अगर हुआ तो आपको कैंसिल करके अच्छा नहीं लगेगा ना। Looks shabby, so whenever you are having any doubt, don't write anything. Okay, children. So now let us come to the third question. घर में जाके complete कर दे। First, you do write with full concentration. Okay, with balance, scribble pad ले लेना। तो sodium chloride, third question. पढ़िए। Chloride reacts with silver nitrate to produce silver chloride and sodium nitrate. Right. First, Write the equation. So what is the equation? What is the formula for silver sodium chloride? NaCl. What is the formula for silver nitrate? AgCl. What is the formula for silver chloride? AgCl. Now we are NaNO3. ठीक है ना? Second question. क्या लिखा है? Check whether it is balanced or not. If it is not balanced, balance it. Right? Balance है कि नहीं? balance. Reaction balanced है? Yes. Yes, good. Third, find the weights of the reactants and the products. और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, तो ये सब दिया रहेगा आपको। क्लोरीन का 35.5, सिल्वर का 108, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 of 48, सब मिला के रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना आ रहा है 228.5 ग्राम्स। अब हम लोग को प्रोडक्ट का मास देखिए, सिल्वर का 108, क्लोरीन 35.5, राइट? This already provided. Yes. Yeah. This would be this. Provided, yes, atomic mass. Then, what I see total mass of the reactor is equal to total mass of products. Means what? This proves a law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed. इसका मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शन में मासेस और एटम्स कंजर्व रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा सर, सोडियम पहले रिएक्शन में दिखाई दे रहा है और प्रोडक्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। There is the reaction. Then fourth, read out fourth one. Yes, बोलिए। Zinc plus sulfuric acid giving to zinc sulfate and hydrogen. Zinc plus sulfuric acid giving to zinc sulfate and hydrogen tells us that one molecule of zinc reacts with the molecule of what? Sulfuric acid will give you one molecule of each of zinc sulfate and hydrogen. दूसरा क्या है? Magnesium tells us that one molecule of magnesium reacts with two molecules of what? Yes. One molecule की जगह पे one atom लिख सकते हैं, right? But उसका molecular atom का formula same ही है ना? One molecule will give us one molecule of magnesium chloride and one molecule of hydrogen. What are polyatomic ions? Polyatomic ions are called radicals. They contain two or more atoms and have what? Charge, like NH4 plus, SO4 2 minus. What is the valency of A? Chlorine in calcium chloride 1, sulfur in sulfur hexachloride 6, phosphorus in phosphine 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन से कंबाइन किया, राइट ना? कार्बन का क्या है 4, okay, is then nitrogen is the following compound N2O3, N2O3 क्या हो जाएगा 6, N2O5 10, NO2 4, NO कितना है 2, याद रखना। Next one, why should an equation be balanced? Explain your answer by giving a simple equation. चलिए पढ़िए, क्या नाम है आपका? आर्या। आर्या will read that. और आपका नाम क्या है? आर्गवी। डबल ले। अच्छा आर्या डबल ले ना? डबल ए आपका है? नहीं, इनका डबल ए है, आर्गवी। के भी है ना? नेक्स्ट
A SH B. अश्विनी ना ए नहीं है इसमें ओके एक में डबल ए दूसरे में ए है और तीसरे में ए इसमें खाली एक ही है ना देन switch स्विच IS अच्छा एंड रो चलो एक एक करके सब लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव पहले ये क्वेश्चन पढ़ेगा ये पढ़ेंगे ये ऐसे करके फिर से चलो फर्स्ट पढ़ो आर्या पढ़िए पढ़ो A to S4 plus MNS4 yes K-4 plus H2SO4 that's 5Fe2SO4 thrice plus H2 plus 8H2O plus 2 yes good next one ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको घर पे जाके करना है राइट so read the next question define yes fully well AMU or simply 12U means what 1.66 that is atomic mass unit is equal to 1/12 mass of one atom of carbon so then next one what is it Ashby na this is very simple क्या करना है आपको sum total of all the atomic masses लेना है कॉपर का atomic mass कितना है 63.5 सल्फर का 32 ऑक्सीजन का 64 plus 5 into 2 plus 16 कितना हो गया 249 yes or no अमोनियम कार्बोनेट का कितना है 96 पढ़ो खाली डायरेक्ट आंसर दे दो अमोनियम सल्फेट का कितना है 132 मैग्नीशियम नाइट्रेट का कितना है 100 राइट चलो बोलो नेक्स्ट वन 10 choose choose the correct answer in the options given there. The modern atomic symbols are based on the method of full blank. A First. second atom where is this Berzelius atom Berzelius answer the number of carbon atoms in hydrogen carbonate radical is what 1 HCl minus the formula of iron 3 sulfate is what Me2SO4 hydrogen to oxygen ratio in water solid sodium carbonate is Na2CO3 that of calcium hydrogen carbonate HCl twice then question number 11 follow correct the Clues. solution correct the following statement a molecular formula represents an element Compound. Next one. the molecular formula of water at H2O represents 9 parts per mass of water Yes. C. 18 parts Huh? H2O represents 18 parts it is a balanced equation Then a molecular formula of water represents 9 parts per mass of water. it would be 80. Yes. Then C. a balanced equation is the law of conservation of mass and so doesn't unbalanced equation
नहीं, only balanced equation obeys the law of conservation of mass. Na? So does an unbalanced equation. नहीं, right? Next one. The molecule of an element is always monoatomic. नहीं, it can be diatomic, it can be triatomic. False. CO and CO, C and capital O and C and small o both represent cobalt. No, CO represents carbon monoxide, capital O वाला, small जो O है वो cobalt है. Next one. बोलिए. Yes. Let's see. ये सब क्वेश्चन अपने को घर में बैठे आपको करना है ना. अब हम लोग जाते हैं इस पे 3 ही मिनट बाकी है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे रखते हैं. 8 कौन सा क्वेश्चन है? बैलेंस. तो आपको क्या करना है? बैलेंस. नाउ 3 मिनट है, 3 क्वेश्चन आपको बैलेंस करना है. बैलेंस H, बैलेंस M और बैलेंस Q. चलो तीनों बैलेंस करके देखते हैं. And these are the homework questions. पूरा बैलेंस करके आपको लाना है. देखते हैं. So that this topic gets over. So next time we'll start with next chapter, chemical equations. Right now? Yes. Chemical changes and reactions. Okay, you don't get. So next time I'll check it. Because time is up. See you next time. Thank you very much. Next time we'll see. Or it's a copy of the painting. Take the image of those notes.